Uh, Hello to and hi to all the students. This is basically a video for 7th class science and 4th chapter, that is your heat and temperature. And in this specific video, I'll be discussing about the concept of temperature scales, right? कि आपके कौन कौन से स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, right? And before starting this chapter, this video, you should have a brief idea about what is heat, and heat is nothing but a form of energy. And about the heat, as we know, it is like the important thing that how it travels from a hot body to a cold body, right? And that's it, right? Okay. To understand this concept of temperature, we should know basically about the movement of heat, कि आपकी हमेशा गर्म बॉडी से एक ठंडी बॉडी की तरफ जाएगी, right? And it is like very simple example if you can take, right? If you have a hot cup of tea, and a glass in which you have poured in the cold drink, right? अब कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थोड़ा ठंडा रहेगा आपका, और अगर हम एक गर्म चाय के कप की बात करें, वो थोड़ा सा गर्म रहेगा आपका। अब होता क्या है, राइट? व्हेन यू आर होल्डिंग दैट कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास, दैट टाइम यू विल फील कि ये ग्लास थोड़ा सा ठंडा है, राइट? So exactly why you are feeling it थोड़ा ठंडा है? Because the heat from the your body is actually flowing inside that glass, right? Because आपके हाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एंड इफ़ यू आर होल्डिंग अ कप ऑफ टी, वेरी हॉट कप ऑफ टी, तो आप क्यों बोलते हैं कि आपको गर्म लग रहा है? बेसिकली आपके हाथ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, एंड कप का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बेसिकली आपके कप से आपके हाथ में आपकी हीट का फ्लो मूवमेंट फ्लो होता है, राइट? एंड इन डिटेल्स इन द अपकमिंग टॉपिक्स फॉर दिस chapter, we have discussed properly like how it is there and why it happens so exactly. So main content for this video is basically about the temperature scale, right? And before starting this temperature scales and all, we should know about the concept of temperature, कि basically हमारा temperature होता क्या है, right? Normally what we do in our life, basically हम चीज़ों को पकड़ के छूते हैं, right? And we use our sense of touch only. बेसिकली हम अपने सेंस ऑफ टच का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ थोड़ी गर्म है, ये चीज़ थोड़ी ठंडी है, राइट? सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। वी यूज आवर सेंस ऑफ टच टू फाइंड आउट वेदर अ ऑब्जेक्ट इज हॉट और अ कोल्ड। अब राइट, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक किसी बच्चे को अगर बुखार होता है, राइट, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, राइट? इधर they'll check the pulse, or they will do like they will touch your forehead or your neck region, just check करने के लिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या नहीं है। तो आप कहते हैं कि हाँ भाई, इस बच्चे को बुखार है क्योंकि इसका थोड़ा ये गर्म हो रहा है, राइट? सो बट बेसिकली हमें ये तो पता लग गया कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, राइट? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस बच्चे को बुखार है, बट कितना बुखार है ये हमें पता नहीं होता है, राइट? अब हम आते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। ये तो एक सो कॉल्ड, राइट, जिस टाइप हो जाती है आपकी हिंट्स कंटेंट के बारे में। अब हम अगर एग्जैक्टली बात करें टेम्परेचर होता क्या है, राइट? टेम्परेचर इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। Temperature is basically a physical quantity which is used for measuring the degree of hotness or coldness of an object. Basically मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? बेसिकली यू नो दैट दिस चैप्टर इज कमिंग अंडर फिजिक्स, राइट? एंड फिजिक्स आपकी बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है, and there are certain properties of physics which can be measured, right? There are certain properties of physics which can be measured, right? जैसे आप जानते हैं आपका लेंथ है, राइट? आप लेंथ या डिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, राइट? आपको उसको मेजर करते हैं भाई सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, राइट? फलाना और भी बहुत होती है, मिलीमीटर, इंचेस होती हैं, राइट? फिर आप कहते हैं टाइम भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए आपके पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपका सेकंड हो गया, आपका आवर्स हो गया, राइट? मिनट्स भी हो गया आपका। सो सिमिलरली टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका काम क्या है भाई? ये तो आपको छूने से पता लग जाता है कि ये चीज़ गर्म है या फिर ये चीज़ ठंडी है। अब कोई चीज़ कितनी गर्म है एग्जैक्टली उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट विल बी एबल टू कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम बता सकते हैं कि भाई कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है, और कोई चीज़ ठंडी है तो कितनी ठंडी है, राइट? So basically, this temperature is a physical quantity which is used for measuring the degree of hotness or coldness of an object. And basically, for measuring the temperature of any body or any substance or any fluid, right, we use a device that is called as thermometer, right? Thermometer का हम basically इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आप डॉक्टर वगैरह के पास में जाते हैं, राइट? They have this different type of thermometers. Either they'll put under your tongue or they'll put under your armpit, आपकी बगल में रखते हैं, जस्ट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, कितना फीवर वगैरह आपको है। तो यहाँ पे एक हल्का सा कहानी ले लेते हैं कि थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कौन सा है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। थर्मोमीटर जो मेजर कर रहा है टेम्परेचर को, वो कौन से प्रिंसिपल पे है, उसका काम करने का सिद्धांत क्या है, राइट? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
thermal expansion, right? Ab thermal expansion, it is not something that you are hearing for the first time. In the previous class, right, in the sixth standard, you heard this temperature, you heard this word actually. ये आपने word आपने पहले भी पढ़ा था. And to again revise it, what is it state? It states कि भाई matter expands on heating and contracts on cooling. यानी कि भाई मैटर का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, जो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम बोलते हैं मैटर. तो भाई मैटर को अगर आप हीट करते हैं तो वो फैलता है, राइट? उसका साइज थोड़ा बढ़ता चला जाता है. और अगर आप उसी का ही टेम्परेचर कम कर रहे हैं या फिर आप उसे ठंडा कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? थोड़ा सिकुड़ना चले शुरू हो जाता है, राइट? ये बेसिकली आप कह सकते हैं उसका साइज थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है. दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ thermal expansion, right? And moving on, there are basically very substances which are being used in thermometer. अगर हम थर्मोमीटर की ही बात कर रहे हैं, तो थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है आपका? बेसिकली we use different types